Thailand is a dream destination, and if you're a travel creator, you already know that aerial shots there are absolutely jaw-dropping. But here's what nobody tells you before you pack your drone and board that flight. Flying a drone in Thailand without permission can cost you a fine of 10,000 Thai baht and up to 1 year in jail. And trust me, a Thai prison is not how you want to end your vacation. So how did I legally fly my drone and get those stunning shots during my Thailand trip? That's exactly what this video is all about. I'm going to walk you through the complete step-by-step process from registering your drone to getting an official license from the Civil Aviation Authority of Thailand to understanding no-fly zones so you can fly legally and confidently. And one quick note, if you have flown illegally in Thailand and got away with it, this video is not meant to attack you. By getting away with it once does not make it safe. Rules exist for a reason, and when the consequences hit, those hits are very real. So stay till the end of this video because this could genuinely save you a lot of trouble. Now before you even think about flying your drone in Thailand, there are two government bodies you absolutely need to know about, the NBTC and the CAAT. Let me break down what each one does, because they handle completely different things. The NBTC, called as the National Broadcasting and Telecommunication Commission, it is the body that regulates the radio frequencies in Thailand. Every drone operating in Thailand emits radio signals, and that's exactly what NBTC oversees. The registration is required for all the drones with a camera regardless of the weight. The fees comes around 214 baht and it must be paid at a Thai bank. You need to note that not all the Thai banks can process the payment. Your NBTC registration is only valid for the duration of your stay as per your entry stamp or visa. The second is the CAAT, the Civil Aviation Authority of Thailand. It is basically the aviation regulator. CAAT registration is required for all the drones with a camera, again regardless of the weight. The good news, CAAT process is completely free, and your CAAT registration is valid for 2 years. So even if you visit Thailand, you don't have to register again with CAAT. However, NBTC will require at every visit. So to summarize, NBTC is all about your drone's radio signals, and CAAT is about your right to fly in Thai airspace, and you need both. There is no exceptions. Now here, what I have to be honest with you, I actually tried to do this myself, directly through the official websites, and the moment I landed on both pages, I immediately felt overwhelmed with the information. The NBTC website, the main page, is in Thai language, and obtaining both registration can take a lot of time and nerves. For someone who does not speak the Thai language, it's a lot to navigate. Forms, uploads, requirements, everything is in Thai. And then the payment issue. The NBTC fees has to be deposited at a Thai bank, and not all banks can process it. That means after landing in Thailand with a packed itinerary, I would have to find the right bank, walk in, make a demand draft, and come back, just to complete one registration. As a travel creator, time is your most limited resource. That just wasn't going to work for me. So let me give you the cost breakdown first before I tell you how I actually solved this. Official cost as per the government authority, NBTC registration fees, again it will cost you around 214 baht, and CAAT registration is completely free. But here is what most people miss. You also need a third-party liability insurance with a minimum coverage of 10 lakh Thai baht, and without it, your CAAT registration will not go through. And there comes FEIC in the picture. I actually chose FEIC to get my drone insurance. FEIC means Foreign Enterprises and Insurance Company. It is a Thailand-based agency that handles your drone insurance and entire drone registration process on your behalf. So I actually gave the word to this particular agency
instead of going directly with NBTC and CAAT registration, and they handle everything without any hassle. Before I take you through the entire process, let me break down the cost which came after registering through FEIC. The drone insurance cost with a basic plan came around 749 Thai baht, and FEIC service charge, which covers both NBTC and CAAT registration, came around 1498 Thai baht. So total cost came around 2247 Thai baht. At the current exchange rate of approximately 2.93 INR per Thai baht, that came around 6583 INR. FEIC actually compiles your documents, submits everything, pays the NBTC fee on your behalf, and guides you through the CAAT process step by step. So I reached out to FEIC through their official website, where I submitted my query. They responded to my registered email within 24 hours with a link to purchase the insurance and start the registration process. I first purchased the insurance and then moved on to the registration part. And I will show you exactly what that looks like on the screen. So this is how it looks. A very few important things to keep in mind during registration. You will need to provide your hotel address where you will be staying in Thailand. So make sure your bookings are confirmed before you start. You will also need to submit your passport photo along with complete drone details, including the make, model, year of manufacture, serial number, and the photos of your drone from multiple angles as specified. Also, do not forget a photo of your drone controller as well. Once you have submitted all the details and made the payment, which covers your insurance and registration fees, you will receive your drone insurance document, which looks like this. So you can see here, you will be getting all the information in both Thai and English language. So this is how it looks. And here is something really important that caught me off the guard. Just because you have made the payment, that doesn't mean that your registration is complete before you land in Thailand. Your NBTC and CAAT registration will only be processed after you arrive, get your passport stamped at immigration, and get a local Thai SIM card. All of this is communicated to you by FEIC over the email, and I have to say they're extremely proactive about it. So on the day I arrived, I received an email from FEIC reminding me to send the photo of my immigration stamp, get a physical Thai SIM card to receive an OTP for CAAT registration, and share my CAAT login credential with FEIC so that they could take it forward. Here is another thing that you must be prepared for. On the same day of your CAAT registration, you need to pass an online exam. FEIC will send you a sample questionnaire to practice, and you will have 1 hour to complete that exam. So do not take it lightly and prepare in advance. You have to appear for that exam at CAAT Portal. Hey everyone, so अभी मैंने मेरे पास स्टैम्प जो आया था, तो मैंने वो स्टैम्प को FEIC को भेज दिया था ताकि वो NBTC का सर्टिफिकेट ले सकें. और अभी मैं CAAT का एग्ज़ाम दे रहा हूँ बैठकर फुकेट में. 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट है, और 40 मिनट में 40 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करना है. सो आई एम जस्ट I'm not sure if you guys can see because of this overexposure, so there is no point of showing it to you guys. So I'm just sitting and giving the exam. I hopefully I pass this exam. तो उसके बाद फिर मुझे 1 से 2 दिन लगेगा वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के लिए. कहाँ से? FEIC, CAAT और NBTC से मुझे मिलेगा. इसके बाद ही आप ड्रोन को उड़ा सकते हो. उसके बाद की इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फर्दर की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा. चलो देन. Hey everyone, so मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया है अभी CAAT का. 83% मेरा स्कोर है. सो मोस्ट प्रोबेबली अब मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए. एंड नाउ आई एम लीगली एलिजिबल टू फ्लाई ड्रोन इन थाईलैंड, एंड आई एम अ रजिस्टर्ड ड्रोन पायलट इन थाईलैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 years. So this is one great achievement. I'll show you my result. Just wait for a minute. So अगर आप देख सकते हो तो मेरा CAAT में 83% आया, 33 out of 40. So let's wait for the registration now. I hope that I will get it very soon in 1 to 2 days. Let's see. Once you clear the exam, you will receive your CAAT drone registration number
and you can download your license directly from the CAAT portal. And this is how it looks like, and this is where you can download your license. Now NBTC works a little differently and takes some additional timing. So just listen to this additional information as to what I did and what I faced before getting my NBTC registration, so that you will be well prepared when you arrive in Thailand. ड्रोन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अभी एक अपडेट आया मुझे, जिस एजेंसी को मैंने दिया हुआ था ड्रोन रजिस्ट्रेशन का काम, उन्होंने अभी NBTC का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। CAAT का मुझे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मिल चुका है, लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुका है, बट दूसरी अथॉरिटी NBTC की है, तो उनको मैंने दिया था। उन्होंने खुद से मेरा ऑलरेडी, क्योंकि क्रेडेंशियल पहले से प्रेजेंट था NBTC में, तो मैंने उन्हें अपना क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया। एंड व्हेन दे आर लॉगिंग, तो उनका जो है लॉगिन करने के बाद एक OTP आपको आता है, OTP आपको सेंड करना पड़ता है। अगर बेहतर होगा अपना व्हाट्सएप से अगर आप उनसे कनेक्ट कर सको, पहले ही अपने ईमेल ID में अपना व्हाट्सएप नंबर उन्हें दे दो, वो तुरंत अपने आपसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर जाएंगे। OTP आपके ईमेल पर आएगा, वो ईमेल तुरंत आप उन्हें प्रोवाइड करें एंड दे विल स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। द मोमेंट यू विल गिव योर क्रेडेंशियल टू देम एंड दे विल बी एबल टू लॉग इन, वो रजिस्ट्रेशन करके 1 या आधे दिन के भीतर जो है वो आपके पास रजिस्ट्रेशन NBTC का आ जाएगा। याद रखिएगा CAAT और NBTC ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। CAAT का लाइसेंस अगर आपको मिल गया, अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हो और NBTC में रजिस्टर्ड नहीं है, तभी भी आपको 40,000 बात का फाइन और 1 साल की जेल कंपलसरी है थाईलैंड गवर्नमेंट में, मिलेगी ही मिलेगा और कोई छुड़ा नहीं पाएगा। तो दोनों का होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो NBTC का होने के बाद एंड देन यू विल बी लीगली, आप ड्रोन फ्लाई करने के लिए आपको परमिशन बोल सकते हैं, आपको परमिशन मिल जाएगी लीगली फ्लाई करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो रूल्स रेगुलेशन उनको ध्यान रखिए, कहाँ पर नहीं उड़ा सकते हैं, जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड जोन होते हैं। तो दैट्स ऑल। एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ड्रोन उड़ाने का, अगर आप ऐसे किसी भी प्रॉपर्टी पर आ रहे हो, तो प्रॉपर्टी के जो हमारा प्रॉपर्टी का ओनर है उससे परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ये थाईलैंड गवर्नमेंट का रूल है। ड्रोन रजिस्ट्रेशन का मिलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी प्रॉपर्टी के अराउंड, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उड़ा नहीं सकते हो। परमिशन लो, अगर वो परमिशन ग्रांट करते हैं आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के बाद, तभी अपना ड्रोन टेक ऑफ कर सकते हो थाईलैंड में। और ये रूल फॉलो करो, ठीक है। ये नहीं कि मिल गया तो उड़ा रहे, नहीं, ऐसा मत करो। सो ये चीज़ बस एक याद रखना, ठीक है। नेशनल पार्क विदाउट परमिशन ड्रोन मत उड़ाना, बहुत हैवी फाइन लगेगा। और उनके अलग ऑफिसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप माया बे में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पे एक नेशनल पार्क का ऑफिस है, वहाँ पे जाओ, रजिस्ट्रेशन अपना दिखाओ दोनों, CAAT NBTC का, उनसे परमिशन लो और फिर नेशनल पार्क में आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। 90 मीटर्स के ऊपर नहीं, और 30 मीटर्स, अगर कोई पब्लिक है, कोई प्रॉपर्टी है, सो फिर 30 मीटर्स के करीब नहीं आना है। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख। और ये कोई बताएगा नहीं जल्दी, मैं बता रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करके रख लेगा। चलो, बाय।